गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि एजुकेशन में एज लिमिट खत्म हो गई है, एनीबडी कैन टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द क्लासेस। तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो अपने काम पर लगा हुआ है वो भी यहाँ एडमिशन लेना चाहता है, और जब एडमिशन लेना चाहता है तो अपने काम के फर्ज, अपने काम का फर्ज करके तो पढ़ने नहीं आ पाएगा। लोग 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर से ट्रेवल करके भी नहीं आना चाहते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आजकल हाइब्रिड मोड, ये तो मिनिमम है कि जब जिसमें टीचिंग होने की आवश्यकता है, ये सबसे बड़ा इनोवेशन है जो कि अब टीचिंग में आवश्यक है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन है कि सारी क्लासेस हाइब्रिड मोड में ही होनी चाहिए। अब ये जो आगे आने वाला समय है, जैसा हम लोगों को इतने लंबे एक्सपीरियंस से अनुमान लग चुका है कि अब दो ही तरह की यूनिवर्सिटीज सक्सेसफुल होने वाली हैं यहाँ पर इंडिया में। इंडिया क्या, पूरे ग्लोबली हो रही हैं। एक तो स्किल यूनिवर्सिटीज, जो कि 12th तक, एक बच्चा 12th तक पढ़ता है तो आप देखिए कितने साल का उसका इनपुट होता है एजुकेशन में। आप काउंट कर लीजिए, प्ले स्कूल, नर्सरी, KG1 KG2, 4 साल, और उसके बाद 12 साल और 12th पढ़ देता है। 16 साल की पढ़ाई करने के बाद भी अगर बच्चे को BCom BA BSc में आके लैंग्वेज ही पढ़ना पड़े, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन, यही सब पढ़ना पड़े, तो वो कब आगे बढ़ेगा और कब अपना कैरियर बनाएगा तो आगे। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। स्किल यूनिवर्सिटीज 12th तक बच्चे का पूरा बेस बन जाता है, आप क्या नहीं पढ़ लेते उस समय तक के 12th तक। अब स्किल यूनिवर्सिटीज जहाँ बच्चा घुसता है तो उसको निकलता है, लगता है कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं कुछ ऐसा बनकर निकलूंगा जो कि निकलते साथ अपने घर का एक अर्निंग मेंबर बन जाऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, मेरा कैरियर डिसाइडेड है। तो अब जितनी यूनिवर्सिटीज नई आ रही हैं, दे आर ऑल स्किल यूनिवर्सिटीज, जहाँ स्किल में ही बच्चे को पारंगत करने की बात होती है। और दूसरी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, डिजिटल यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, जहाँ की 80% कोर्सेज तो डिजिटली ही होने चाहिए। बाकी 20% योर प्रैक्टिकल्स, योर असाइनमेंट, फॉर दोज पर्पसेस, फॉर योर डाउट क्लियरिंग, यू कैन कम एंड मीट द फैकल्टी। हमारे देश में इग्नू आपने सुना होगा, जो कि A++ यूनिवर्सिटी है और विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ करीब करीब 35 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं इग्नू, और उसके कोर्सेज एट पार है ग्लोबली। इफ यू गो थ्रू देयर सिलेबस, दैट इज सच अ क्वालिटी सिलेबस व्हिच इज एट पार ग्लोबली। उसकी डिग्री का रिकग्निशन ग्लोबली है। तो ऐसे ही पैटर्न में सारी यूनिवर्सिटीज को खुलने की जरूरत है। मैं इग्नू से एसोसिएटेड रही हूँ एटलीस्ट फॉर 14-15 ईयर्स, और मैंने वहां देखा कि बच्चे की सुविधा है। अब हमको स्टूडेंट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज बनाना है, नॉट ट्यूटर ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी। पहले क्या होता था, क्लासरूम में टीचर यूज्ड टू बी द मास्टर ऑफ द क्लास। जो पढ़ाना है, जिस लैंग्वेज में पढ़ाना है, जितना पढ़ाना है, टीचर डिसाइड करता था। पर अब ऐसा काम नहीं चलेगा। अब तो स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लासरूम्स होने चाहिए, जहाँ स्टूडेंट की पेस के हिसाब से टीचिंग करने की जरूरत है। इग्नू में आपने देखा होगा 3 years का कोर्स कैन बी completed in 7 years. Student can give exam after every 6 months according to his choice. जो पेपर जब प्रिपेयर कर लिया तब दे दिया उसने। किसी सेमेस्टर में उसने एक भी पेपर प्रिपेयर नहीं किया तो वो नहीं देगा। But in 7 years is the maximum period in which he can complete a course. मुझे लगता है कि अब इस तरह के बदलाव की आवश्यकता सारी यूनिवर्सिटीज में, सारी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में होंगी, तभी बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ मोटिवेट होंगे। हमारी NEP कहती है कि यू हैव टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाय 50% 2035 तक। पर मुझे लगता है कि इसी साल GER बहुत गिर गया। अब जितने भी कॉलेजेस में, मैं जिस यूनिवर्सिटी से आती हूँ, we used to have 90,000 to 1 lakh private students every year in that university. और हमारे रेगुलर बच्चे 1 लाख 2 लाख बच्चे हुआ करते थे उस यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में।
This year I came to know that the number of private student has gone down to 9,000. Could you believe कि एक साल में जैसे ही एडीपी लागू हुई और ये कहा गया कि हर प्राइवेट बच्चे को कॉलेज में वैसे ही आना पड़ेगा असाइनमेंट्स के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए, प्रैक्टिकल के सेशंस के लिए, द नंबर केम डाउन टू 9,000. इसका मतलब कि बच्चे उस पैटर्न से संतुष्ट नहीं है, उस पैटर्न से पढ़ाई करना नहीं चाह रहे. तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हम हायर एजुकेशन को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल सजेशंस होने चाहिए. डिजिटल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन. और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज खुलती हैं हमारे देश में तो वो इस समय की हमारी सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी आवश्यकता है. अब मैं थोड़ा सा क्लासरूम टीचिंग्स की भी आपसे बात करना चाहूंगी कि we need to change the methods of teaching in the classroom. क्लासरूम में हम जो बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं, बच्चे हमारे क्लासरूम्स में नहीं आते हैं, वो समय गया जब आप बच्चे को क्लास में, स्कूलों में मैंने देखा कि टीचर में एक टेबल बोल देती थी और पूरी क्लास जो है उस टेबल को लगातार पूरे पीरियड भर बोलती जाती थी और क्लास खत्म हो जाती. अब वो समय नहीं. अब तो आपको बच्चों को आकर्षित करना है, अट्रैक्ट करना है. और जैसा मैंने अभी आपसे कहा, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम्स तैयार करने हैं, वाइब्रेंट क्लासरूम्स होने चाहिए, लाइवली क्लासरूम्स होने चाहिए. ये नहीं कि आए और स्टूडेंट का ध्यान है ही नहीं, वो मोबाइल देख रहा है और टीचर क्लास में कुछ भी पढ़ा रही है और जा रही है, बिकॉज टीचर इज सपोज टू कंप्लीट द कोर्स कंप्लीट करना है, इसलिए जो भी 40 मिनट में पढ़ाए और चले गए. नहीं. आजकल मैं एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में क्लासेस लेने जाती हूँ प्रोफेसर्स की, जिसमें टीचिंग टेक्नोलॉजीज ही बता रही हूँ कि हाउ टू चेंज द टीचिंग मेथड्स टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स टू द क्लासरूम. उसमें एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बताई गई है, फ्लिप द क्लासरूम. फ्लिप द क्लासरूम इज टू लाइक क्लासरूम को पूरा चेंज कर लीजिए. जो काम घर में करने के लिए देते थे वो क्लासरूम में करवाइए और जो क्लासरूम में आप टीचिंग करते थे वो घर में पढ़ने के लिए बोलिए. जब तक आप इस रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाई शुरू नहीं कराएंगे, बच्चे आपकी क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे. मोस्टली आपने देखा जो कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं, पीजीडीसीए हो गया, डीसीए हो गया, हम क्या करते हैं क्लास में बच्चे स्टूडेंट को टीचर वही पढ़ाते थे जो बुक में सारा कोर्स दिया रहता है. And we ask them to prepare all the projects at home. और वो बच्चा जब किसी एंटरप्राइज में काम करने जाता है तो उसको कंप्यूटर यूज करना ही नहीं आता, क्योंकि प्रोजेक्ट तो उसने खुद बनाया ही नहीं होता है. आप तो सब अच्छे से जानते हैं, मैं भी एक कॉलेज में 10 साल से ज्यादा प्रिंसिपल रही हूँ. बच्चे जो है वो कंप्यूटर शॉप से जाकर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स ले आते हैं, बने बनाए. क्या सिखाया बच्चों को पीजीडीसीए में? से बेटर है कि जो बुक्स अवेलेबल हैं लेट देम स्टडी एट होम, और क्लास में उसको ग्रुप डिस्कशन मेथड से, एक्टिव लर्निंग मेथड से उस चीज को पूछ लीजिए जो बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. What you are supposed to do is to get the assignments done in the classroom. जो असाइनमेंट्स आप देते हैं, जो प्रैक्टिकल्स आप देते हैं, वो करना चाहिए कॉलेज में अपने मेंटर, अपनी टीचर की प्रेजेंस में. तब वो बच्चा कुछ सीख पाएगा और यहाँ से निकलकर वो प्रैक्टिकली कुछ कर पाएगा. सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज नाउ रिक्वायर्ड टीचिंग में. नहीं तो आप पाएंगे कि कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, चाहे सिलेबस बदल लीजिए, चाहे डिजिटाइजेशन के नाम पर प्रेजेंटेशंस करवा लीजिए क्लास में, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला. अब हमको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शुरू करना है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग शुरू करना है. जो भी आपका टॉपिक होता है, स्टूडेंट्स को उसको डिवाइड करिए, लेट देम टॉक इन द क्लासरूम इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन. प्रोजेक्ट्स बनाकर उसको प्रेजेंट करें. एटलीस्ट एक बच्चा जिस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाता है वो प्रोजेक्ट उसको बाय हार्ट याद हो जाता है. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कुछ क्वेश्चंस क्लास में अराइज कर दीजिए, इंक्वायरी, और उस पर बच्चों को कहें कि आप मैटर रेडी करके लाइए और कल उसको क्लास में आपको प्रेजेंट करना है, बोलना है. आजकल वर्चुअल क्लासरूम्स भी हो रहे हैं. वर्चुअल क्लासरूम जो घटनाएं आप पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2
पूरा का पूरा वर्चुअली आप क्लासरूम में दिखा सकते हैं, उसको पूरी घटनाओं को दिखाइए। जिस चीजों को आप देखते हैं उनको आप बहुत ज्यादा समझ याद रख सकते हैं, रादर देन जस्ट गोइंग थ्रू द मैटर। तो इतने ज्यादा परिवर्तन आपकी टीचिंग टेक्नोलॉजीज में करने की आवश्यकता है, एंड एवरी टीचर शुड ट्राई टू चेंज द टीचिंग टेक्नोलॉजी। अगर उसमें आप बदलाव नहीं लाएंगे तो आप इस एरा के लिए मिसफिट हैं। आप अपने बच्चों को क्लासरूम में नहीं बुला पाएंगे, उनको क्लास में आप अटेंडेंस के लिए फोर्स नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि अगर हमको ग्रो करना है तो हमको चैलेंजेस तो फेस करना ही है। नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छे से कहा था कि मैन नीड चैलेंजेस टू ग्रो, एंड एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन व्हिच कैन चेंज द वर्ल्ड। हमको किसी चीज में परिवर्तन लाने के लिए वेपन्स की जरूरत नहीं है। एजुकेशन ही एक वेपन है जिससे आप बहुत कुछ लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं। पर अब इसमें हमको स्वयं को आगे बढ़कर, अब जो बॉल है ये टीचर्स के कोर्ट में, प्रिंसिपल के कोर्ट में है, एजुकेशनिस्ट के कोर्ट में है, कि आप जितने अच्छी तरह से उसको फेंकते हैं दूसरी तरफ, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप एजुकेशन में क्या चेंजेस ला सकते हैं। अब वो पुराना समय नहीं है कि कुछ नोट्स और कुछ बुक्स ले जाकर क्लास में। अब तो स्टूडेंट्स साफ साफ कहते हैं कि जब बुक में से जिससे पढ़ा रहे हैं वो किताब ही खरीद लेंगे, जरूरत क्या है उसको क्लास अटेंड करने की, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द बुक। तो क्या पढ़ने की जरूरत है, आपका अपना कुछ इनपुट नहीं है, आप कुछ उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि बच्चे को क्लास में आने की क्यों आवश्यकता हो। तो जो रीवैम्पिंग की बात आप लोग कर रहे हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम टू मीट द चैलेंजेस ऑफ दिस सेंचुरी, सबसे जरूरी चीजें जो थी वो मैंने आपसे बात की कि यूनिवर्सिटीज और क्लासरूम्स का टाइप चेंज होना चाहिए, टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज होना चाहिए। कंटेंट की बात तो फिर बाद में आती है कि क्या कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं। और डेफिनेटली अब यूजीसी ने प्लान किया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको वहां पर बहुत विवाद भी हो रहा था, इवेंट टू न्यू दिल्ली सम अ वीक अगो, जहां पर बात हो रही थी कि अब इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम क्यों कहा जा रहा है, अब इसको भारतीय नॉलेज सिस्टम क्यों नहीं कहा जा रहा है। जब आप हर जगह इंडिया हटा के भारत लगाने की बात करते हैं तो इट शुड नॉट बी आईपीएस, इट शुड बी बीकेएस। परंतु उस पर भी खूब विवाद होता रहा। पर अब ये कहा जा रहा है कि हर सब्जेक्ट में भारतीय योगदान को पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, हमारे क्लासिकल डांसेस, और हमारे सारे सब्जेक्ट्स, आपका गणित हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, संस्कृत हो गई, लैंग्वेजेस हो गए, इवन मैथमेटिक्स में भी आर्यभट्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन था। तो ये सारी चीजों को अब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि शायद हमारे बच्चे हैं वो अपनी पुरानी चीजों को ना तो याद रखते हैं और ना समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए यूजीसी अब ये भी प्रयास कर रहा है कि ये सारी चीजें उनके सिलेबस में ऐड कर दी जाए। तो बहुत अच्छा आपका सेमिनार का टॉपिक है, इस पर बहुत ध्यान से अगर डिस्कशंस होते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत यूजफुल सेमिनार हो सकता है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से अटेंड करिए, क्योंकि जब आप यहाँ बैठे हैं तो फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी बैठिए और सीखने का प्रयास करिए आप। मैं कोलंबिया कॉलेज की का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ पर आप लोगों ने इनवाइट किया, उसके लिए हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you so much, ma'am. Now, I would request Honorable Mr. Kishore Chadwani, sir, Chairman, Jan Pragati Education Society, to please come for the pledge of appreciation to our chief guest with memento.
Thank you. I would like to please Dr. Neelam Arora ma'am for their vote of thanks to our chief guests. Good afternoon to everyone. I am Neelam. I would like to offer my sincere gratitude to today's chief guest, Dr. Aruna Palta madam. We are grateful to you that you accepted our invitation and gave your valuable time to us. You have strong support and an open attitude towards teacher and students. We have been blessed with you, ma'am, and your valuable time and guidance. The entire Columbia family is grateful to you. Thank you. Thank you so much, ma'am. आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आभार थैंक यू वंस अगेन Thank you, ma'am. Now, I would humbly invite our keynote speaker, Honorable Dr. G. Ravindra sir, for their keynote speech. Please, sir. Dr. Aruna, the former Vice Chancellor of the University. And other dignitaries of the dais. Let me first profusely thank Dr. Arun Kumar Dubey and Dr. Abha Dubey, because they are the person who brought me here to interact with you on a topic. The topic is connecting Indian pedagogy, consisting of concentration, feelings, aesthetics, and dynamic experience to mathematics education. I think in mathematics, you don't have to be afraid. I'm not going to speak too much on mathematics. But even then, let me tell you, mathematics is basically a difficult subject. It's difficult, it's not difficult because people feel it. Mathematics is difficult because of precision. The precision means it's either true or false. And this happens only in mathematics, nowhere else. Not in physics, not in chemistry, not in political science, not in home science, not in other subjects. Mathematics is precise subject, either true or false, only one thing. So mathematics may be a difficult subject. I'm not going to touch upon the difficult aspects of mathematics, but I'm going to touch upon that thing that makes mathematics different from other subjects. So the first thing is connecting. I think some 20 years back, there was something called now it's connectivism. There was a constructivism. Somehow constructivism failed because of some problems. Now people are talking about the connectivism. But connectivism, what I mean is connecting two objects or two concepts. What is the meaning of a connect? Connect means we have to find something common between two concepts, say P and Q. P and Q, two concepts. Find something which is common to them. And there may not be a link at all, but still you have to do if that's what is
the aim of education. You will have to connect them. See, if you look into the any two concepts or any two outputs, there are only three ways. If you take P and Q as two objects, one is P is Q. P is Q means P is part of Q. So whatever happens for P will also happen for Q. P is part of Q. Other one is some P is Q. Some portion of P is in Q, some portion of P is Q. That means there's something in P which is not in Q, there's something in Q which is not in P. So they intersect, but not one in other. Some P is Q. Other one is no P is Q. In fact, these are the only three possibilities. Think of it. In fact, that's the beauty of what is called as a Venn diagram. Any two objects can be connected only in three ways. P is Q, or some P is Q, no P is Q. I think that's what is the connection. And generally in education, when we talk of connectivism, if they are already connected, nothing to do anything. But suppose there is disjoint, there is no connection whatsoever. Then what is it you will have to do is you will have to connect it. I'll give you the best example, which is very, very relevant to present situation, what we call the nafrat. Nafrat means hatred. I think this is one thing which is bothering all of us. People thought politicians stop that nafrat ko hatao, aapko bulao, hoga nahi. But what has to be done? This nafrat has to be brought into. Yeah. So for that, education has a big role. See, there's something called a Dallas report. What one of the things is called live together. Live together looks so simple, but how to make people to live together? It has to start from a family. A small family of a husband and wife and two children. I think they start living together. Living together means what? They should talk to each other. There has to be some part of discussion of this one. So this living together is a one as a consequence of living together is nafrat. It slowly go, but not in a day or two. It will take 6 months. It will take 1 year. But a sincere attempt has to be made. An educational attempt has to be made to come together, living together. The consequence of living together, thoroughly living together is harmony, living peacefully, beautifully, all those things will be there. So this is living together is one educational tool to bring destroyed objects, destroyed nafrat, to reduce nafrat and convert it into fab. So that's what is the connectivism. And then the first thing of how we can connect education has a role. One of the aspects of the tool of education is living together. And when they're destroyed, try to bring them together through some efforts. It should start from a family, then it should go into a curriculum and all that. Now, there are 4 aspects. One is a concentration, other one is a feeling, other one is aesthetics, other one is dialectical experience. But I don't take much time, only 2-3 minutes, 2-3 minutes touch about. Now, concentration means what? See, the problem with education, the present day education is, by examples, they want to prove theorem. Even if you give infinite examples, you cannot prove experiments. So, this is what is being done, giving examples and examples and examples. I think examples good to start. Like living together, good to start. Later on, many other things to be done. So concentration actually means that means you go deep into an object or a concept. I mean, concept. Go deep with the total focus. You should see only that object, nothing else. One of the best examples of Mahabharata is that Matsya.
Arjuna, when he shoots a fish, and Draupadi comes and joins it. But the achievement of concentration, he marries to a beautiful lady. So this is concentration. But the another best example is the Ramanujan. Ramanujan was ill. He was admitted to a hospital in Trinity. He was very, very ill. And his mentor, Harding, goes to the hospital and tells him that I came by a taxi. Number is 1729, 1729. He says it's a very odd number, not good. But then immediately Ramanujan says, no Harding, no. It's a very interesting number in the sense 1729 can be expressed as a cube of 12 cube plus 12 cube or 10 cube plus 9 cube. And this is the only way. Not only is this the smallest number, 1729 can be expressed. But you know, what is important is he tells it in a few seconds. And that's because of the concentration he had. And when people ask him where from he got the concentration, his family, Devi, some form of Saraswati. He used to come in a dream and give all this. His concentration he got from that. And his concentration not only concentration, intuition also. He used to, in fact, if you look into his any no proof. Even today, people are trying to give a proof of that thing, but all of them are true. So the third one is Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar, if you look into his hitting sixes, you were not seeing anything. You were seeing only the ball, straight back. And the implication is that he is the only person in the world to score 101 centuries in all formats of cricket. Nobody else, not even without one. Fourth example is my own example. I was studying in a government school called Asif Gali in Gulbarga. It was surrounded by a mutton market and vegetable market. So much crowd outside my food, but inside the school, pin drop side. And you look at the government school, very ordinary school. There was a tennis table, and in the staff room, there was a billiards table. Imagine, that was the kind of very ordinary government school in Karnataka. But there was a teacher called Gudingappa, who was the no chappals. He was having a torn coat, and the concentration what he was doing, he was going to every student. The problem one day he gave us was, you have a triangle and draw a circle which touches every vertex of the circle, 3 vertices. And then he asked students to, he gave only how it has to be done only. Then he would go to, this is most important, he would go to every student, silently look at it, and would observe whether the student is concentrating on the problem. But this sort has to be done by the teacher. When the teacher goes, he should see whether the students are concentrating on a topic or on a problem. But then he called me into drawing. There was a compass box was there. And since some 3-4 months we had already done it, I needed some report. But the good thing about it is he just motivated and testing our concentration. And concentration means many things. It can imply even difficult problems of thought, like the merchant. So that's the concentration. And nowadays, I think the concentration is the one you can see. Not much, because of the computers. See, people are thinking that concentration implies rote learning and all that. If a computer does rote learning,
what are you doing? You're just looking at it again and again, again and again, again and again. It's a total learning. So I think we have to be careful about this concentration. The concentration, even today, it matters. The second thing is the feelings. In fact, feeling is the shortest way of learning. I don't know how many of you agree. It's the shortest way of learning. If you feel it, that's. I'll give you one example of Adi Shankaracharya, the famous philosopher, one of the best philosophers the world has. Adi Shankaracharya is the one who started the Advaita philosophy. Means Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi means I can myself take me up and reach the highest knowledge. So that was the Aham Brahmasmi. So his example is, what he said was, when there is a problem, when there is a difficult problem, all that you will have to feel it. Then the solution is automatic. The reason is feeling is the shortest way of learning. Otherwise, if you don't have feeling, you are lost in a jungle of thought. I think it makes a lot of sense. Feelings do matter in education. Feelings do matter in mathematics. Feelings do matter in physical education. Feelings do matter in home life. Feelings do matter. And feelings also imply intuition. Intuition. Drama. I see. The third one, the most important one, aesthetics. Aesthetics means beauty. And you look into any curriculum framework or any NEP, National Education Board, aesthetics is always mentioned. But you go to any training college, including yours perhaps, whether you can give them the information about the aesthetics and why aesthetics is so important, why it is at the center of the quality education. No, because I know very well, I was in NCRT for more than 32 years. I was principal of several regional institutes. I was there. I know very well I was part of the curriculum framework and all that. But still, we were not able to implement it, not even mention 3 or 4 times in a class. I think there is state of it. But aesthetics is at the center of education. It's a quality thing. And how do we get this aesthetics? Aesthetics come from a defining situation. Like, see, infinite. No clad Himalaya, infinite. You know, the best example is the counting numbers 1, 2, 3, 4, 5. Go on, every number has got a successor. So, the best example of that thing. But it's very difficult to get in infinite situation in day-to-day life. Even the number of water molecules in Bay of Bengal is finite. To want a proof of it, you can meet me later. It takes 5 minutes. So that is the situation of invite. But aesthetics, source of aesthetics or beauty is from the infinite. Like natural numbers, counting numbers, or poetry, or music. They're all infinite. But mathematics, this is beauty. The maximum contemplative beauty is mathematics. Contemplative beauty means ordered, educated beauty. So that is maximum chunk of contemplative is part of mathematics. And we always keep on telling, oh, mathematics is a difficult subject, don't go near it. But then without mathematics, nothing would be done. You cannot have you cannot have engineers, you cannot have scientists, you cannot have computers also. All algorithms in computers based on mathematics. And all that what is happening in algorithms is based on the proof or the theorems what we use in this one. We keep saying, oh, mathematics is difficult, but we want it's necessary
maybe less in but I don't know. But mathematics is difficult not because of weak saying or feeling fear and all that. Mathematics is difficult because of precision. So that is aesthetics. And how you can bring aesthetics in the class. It's the most important. So one of the ways is, for example, in geography, Earth is round. When Galileo said Earth is round, he was finished. The people don't say that Earth is round, it's flat. Because we feel Earth is flat here. But it's in a finite situation. But see, the aesthetics, how you would help. You take students to your see, not necessarily all students could be taken, because 100 students could be taken to the sea, the Bay of Bengal, or Arabian or Hindu Mahasagar. There, if you see, you can see that the ships, you can see them moving in a curvature. In fact, the best example of the students who know the vector is some students asked me this question: how we can show that Earth is round in the classroom? For me, it's difficult. If somebody can do it, it's wonderful. So, aesthetics, taking it to a sea or taking in a natural surrounding. The thing is, you can do it. But in fact, the best source of aesthetics is the mathematics. I think everyone up to 10th standard knows mathematics, knows natural numbers, still they kept away from aesthetics. Even aesthetics, mathematics could be used in geography, political science. Is there any situation to tell me where numbers do not exist? Think of any situation, this classroom, number of chairs. Think of anything. There you find numbers. 10 numbers, one number at all. So there are ways of doing it, but leave students to say that give a few examples of aesthetics in mathematics, small examples, your own examples, how they can see beauty in mathematics. I think that's something that things that we do. So the last one, then one or two other examples. Dynamic experience. Experience is what? Experience is the kind of activity. It could be educational activity or direct contact with I will say in educational activity. That's it. Experience. And dynamic is the one which is not constant, which keeps on changing continuously. But we have to see that the students have an experience. There's one tool, I'll tell you later, what is called as the index of teaching. So this dynamic experience, at least we have to understand how we can get that dynamic experience. The best way of getting the dynamic experience is through discussion and dialogue. And dialogue are missing. In fact, if dialogues are there, nafrat will go. We need to have dialogue. Everywhere we need to have dialogue. See, only when we have dialogue, we understand each other. The dialogue is a must. Discussion and dialogue. We know it, but we don't implement it. I don't know why. And it's easy to implement. Dialogue and discussion, not difficult at all. In the classroom, if there's a dialogue between the student and teacher, it can easily happen. And it can naturally it's possible. So dialogue and discussion through imagination, through aesthetics, to thinking, so many ways of looking at dynamic things. So I'll come to that example. I'll just take another 2 or 3, 5 minutes maximum. So
These are the four aspects. There are many pedagogy, but let's not be under the wrong impression that Indian pedagogy means only in India. Of course, in ancient India, we had a Vedic period. From Vedic period, after 5,000 years after the Vedic period, there's a mouth to mouth. All that knowledge was transferred from mouth. There was no writing, nothing like that. You express your ideas to other person, he will respond it back. So mouth to mouth, face to face. So I don't know, mukh se mukh. So that was the after the Vedic period, 5,000 years, we had this pedagogy, Indian pedagogy. But now things have changed. So there is no learning without fundamentals. Fundamentals are must. I'll just give you an example for those who are interested. We can meet me later. See, this is a question asked by some of us in around 500 workshops organized in RI Bhopal and RI Mysore Regional Institute. The question we just asked was why -2 into -3 is +6? If anybody knows the answer, thank you. One need not, I mean, I think all of us, we are learning mathematics of 10th standard. And up to the 8th standard, any student up to 8th standard who is learning mathematics should be able to answer it. So, not even a single teacher was able to answer this question. What does it imply? That means secondary teacher of mathematics did not understand mathematics. That's an implication. And if that is the situation, what is the state of affairs of mathematics of students in Indian context? But the good thing is, students do know mathematics better than the teacher. Fortunately. In fact, Indian students are doing much better in America than the American students because they have that imagination, they have that love for mathematics. So that mathematician. So fundamentals are must. And those who are interested in the proof of this, we can WhatsApp it to you. But you will have to do it fundamentals of it. The fundamentals we have learned up to its standard. Every one of us in this hall learned mathematics up to its standard. Forgotten, that's a different thing. Then the last one, this was called what is called as a to find out whether the learning is taking place in the classroom or not. I think there's a place called Sandu. Myself and my two of colleagues, Basti and other, we had gone there for a workshop. We wanted to know whether the learning takes place in the classroom. We sat in a classroom, 10 classrooms over a week. Fairly good students, fairly good teachers, private schools. But the unfortunate thing was no student asked a question. Almost zero. If a student do not ask questions, what does it mean? The learning has not taken place. It's an implication of it. Almost 10 classes for a week. That means each class was observed on an average 4 times. So that's the state of affairs. It may be in all the schools also. Maybe a few good schools. So the point here is that after we discussed with several experts also, then we came to a conclusion. That number is called as IT, right? Within bracket, not this IT, information technology. Information technology is something different, which is totally opposite to this. This IT has not to do with the aesthetics. So IT is
index of teaching is the number of questions asked by students in a classroom, maybe any level of a period, half an hour to 2 hours. I don't think we have a class more than 2 hours. But in France, they have a class of 4 hours. A teacher teaches 4 hours. In France and America, nobody uses PPP. Everyone uses Blackboard. They will come to that. So that was the thing, and we came to a conclusion: is IT has to be at least 5. I think this is one of the easiest ways of finding that the learning takes place around. All this the teacher has to do it for 20 days or 15 days. The teacher has to, on a corner of a paper, write this date, so many questions are asked, this date, so many questions are asked. After 20 days, the teacher can find out that the learning has taken place. Then the teacher can modify. If the IT is less than or equal to 4, less than 4, then the teacher has to find out ways of seeing when how students can ask questions. See, this is a way of motivating. This is one of the easiest ways of finding out whether the learning is taking place or not. If it takes place, is one. There's one about the aesthetics part of it, how to measure aesthetics. So there's a formula given by Birkhoff. What the formula says is equal to M is equal to O by C. M is measurement of aesthetics. O means order or harmony. And C means complexity. M is equal to O by C. So if O is very large and C is constant, that means aesthetics is very, very large. If complexity C is very, very large, then aesthetics is almost 0. So using this one, we can prove that Gandhiji was the most beautiful person. How? Because Gandhiji complexity is almost 0. The most simple person. And his order was harmony was very good. He was the most non-violent person, very, very peaceful. And whatever he used to do it in an order, in a harmonious state. So what does it mean? Order is very large. Complexity is almost 0. So the most beautiful person, Gandhiji. That's it. The last thing I would be blackboard. Because the blackboard is the one I like it very much. Even today, in my classes, I teach MSc Mathematics theory in Christ University, and I use only blackboard, no PPT at all. I keep advocating it to my friends. No PPT. So the blackboard is more than 5,000 years. In fact, Indus Valley civilization is only 2,500 years. But many things, ancient things happened in India, are all during that period. Even the use of compass, drawing the circle, was done during the Indus Valley. That's it. In fact, that was the best period in India. We don't tell this thing class. Modi has never told about Indus Valley civilization. He talk only about something. So that Indus Valley. This blackboard is more than 5,000 years old, and we have been using it. Only recently, last 20, 25 years, this PPP has come rampantly, and we are talking too much about computer education, digital India, and all. Digital India will not make any impact on school students. It will have a negative impact, because it will curb the creativity. I'll tell you why. Because when you have a PPT, I've seen many of my students, even in some conferences I have. But if it's 10 minutes, and if you have to give maximum information, fine. As an information technology, fine. Because there is the chance for a student to think. Because for thinking, you have to use some time.
with the week time. But we don't give them time at all. In 10 minutes, we go to teach what has to be taught in 1 hour. I think that's what PPT is doing. It's a big time, but people do not understand. Some praise for the digital India. Digital India is good to some extent. Maybe the beautiful reservation, bus reservation, train reservation, all food side in that sense. But in classroom, no, because it curbs creativity. And students take it from me, they will not be able to understand what you want to teach. I'm telling you very honestly that it has its own limitations. So we need to balance blackboard teaching and the computer teaching. So there has to be some balance. In my opinion, it is 75-25. 75 for blackboard and 25 for digital. So with these words, the last one and the consequence of this one. There's a theorem called four-color theorem. It's a simple one to understand, but it took 125 years to probably get using 1,200 hours of computer. But what the theorem says is, you take any map, to color the regions of a map such that adjacent regions of different colors. The conjecture was, you can always read it with 4 or less colors. This was the 4-color conjecture, remained unsolved for more than 185 years. It was proved several times, and it was disproved several times. Ultimately, in 1975, Apple and Ken, who not mathematicians, engineers, they proved using 120 hours of IBM computer, IBM 360 computer. Now it is reduced to 45 hours or 30 hours. But even today, we don't have the proof of the computer free. So those who give a computer free proof, I think is worth 2 Nobel Prizes. So all that what I would say is, see what if computers say, because after all, computer chips are only some chemicals. Each chemical has got a life. They don't have infinite life. So anytime they can fail. So using computers, giving some deliverable proof is unbelievable. As an example, as an illustration is fine. Computers are good for illustration, but not proving it here. So thank you. Now, this is time for a question answer session. If you have any doubt or questions regarding on this topic, you may ask, please. Now, I would humbly invite Honorable Dr. Rajiv Chaudhary, sir, for their keynote speech. Please, sir.
Big chief guest, Dr. Aruna Parta, former Vice Chancellor, keynote speaker, Honorable Dr. G. Ravindra, Shri Kishore Ji, Chairman of the Society, Shri Harjeet Singh Ji, Secretary, and the young dynamic leaders, Finance Secretary, Dr. Ravindra Ji, the college, Dr. Arun Dubey Ji, principals of different colleges, teachers, and dear students. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to each and every unit associated with this organization, associated with this seminar. I am feeling great pleasure as I have got this opportunity. Directly, I am coming to the presentation. Since organizers allotted me only 30 minutes, 30 मिनट में पूरा एक व्याख्यान होगा. Before that, I would like to ask a question from you all. In which language you will prefer to hear? किस भाषा में सुनना पसंद करेंगे? हिंदी बात करते हैं. हिंदी में आप सबको पता है कि ये जो आयोजन किया जा रहा है, सेमिनार एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है. हिंदी में हम कहेंगे इसको कि एक चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार का सुधार होना चाहिए, कुल मिलाकर बात होगी. तो इस थीम से, इस सेमिनार के संगोष्ठी के शीर्षक से एक बात तो क्लियर स्पष्ट है कि चुनौतियां हमारे सामने हैं. तो इन चैलेंजेस का सामना हम कैसे करें, इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए. तो आप एक बात से मेरी सहमत होंगे, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज नॉट अप टू द मार्क. यदि शिक्षा के स्तर को, देश को देखें हम, अप टू द मार्क नहीं है. रिगार्डिंग दिस सम ब्लेम्स पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हमारे नेताओं के कारण, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि इट्स ड्यू टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स की सुविधाएं हमारे पास नहीं. दुनिया भर के हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, वी शुड कीप इन आवर एंटायरिटी ऑफ माइंड, मेन कॉज इज द लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च वर्क इन एनी फील्ड. चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, शोध की गुणवत्ता के कारण. क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने, दुबे जी ने और उनकी टीम ने एक उप शीर्षक रखा हुआ है, रिसर्च एंड इनोवेशन. तो उस जो मेन शीर्षक से जो उप शीर्षक है, जो सब थीम है, रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस, की एक अनुसंधान पर आधारित समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, उसकी विस्तार से चर्चा करूंगा. तो आप सबको पता है कि इस सेमिनार का शीर्षक है रिवैम्पिंग हायर एजुकेशन टू मीट द चैलेंजेस इन द 21st सेंचुरी. और बता चुका हूं मैं, उसमें से उप थीम है, जो उप शीर्षक है, सब थीम. I selected my topic from the sub theme, research and innovations. शोध की गुणवत्ता समान नहीं हो सकती. मैं करूंगा तो अलग होगी, आप करेंगे अलग होगी, तीसरा करेगा अलग होगी. उसी शोध कार्य को विभिन्न शोधार्थी, विभिन्न अनुसंधानकर्ता यदि करते हैं तो गुणवत्ता समान नहीं हो सकती. Same research study can be conducted by using different designs and statistical tools. दुनिया भर के शोध विकल्प है, डिजाइन्स हैं, दुनिया भर की सांख्यिकीय तकनीक है, जिनको अपनाकर हम निष्कर्ष निकालते हैं. तो कुल मिलाकर वो यात्रा, वो जर्नी जो कि समस्या से शुरू होती है और हमें समाधान तक पहुंचाती है, उस यात्रा की बात करेंगे. जो अच्छी यात्रा कैसे करें, अच्छा अनुसंधान कैसे करें. तो दुनिया भर की रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, फिलोसफिकल रिसर्च है, सर्वे स्टडी, सर्वेक्षण अनुसंधान है. बट द बेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च आर कंसिडर्ड एज अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. जो आज की युवा पीढ़ी है, वो फैक्ट्स पर, तथ्यों पर आधारित बात करती है, कोई कहानियों पर आधारित बात पर विश्वास नहीं करती है. यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स. तो बात होगी हाउ टू कंडक्ट ट्रू एक्सपेरिमेंट्स, हाउ टू कंडक्ट वैलिड एक्सपेरिमेंट्स, हाउ टू कंडक्ट रिलायबल एक्सपेरिमेंट्स. एक बहुत अच्छे प्रायोगिक अध्ययन कैसे करें, क्योंकि हम सब जानते हैं
The research is a process whereas the activities are carried out systematically to find out the solution of a problem. जो अनुसंधान एक वो प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न गतिविधियां क्रमानुसार किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए की जाती है। तो समस्या का समाधान निकालने के सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हाउ टू कंडक्ट जेन्युइन एंड ट्रू एक्सपेरिमेंट्स, मैं अपनी बात आप तक ठीक प्रकार से पहुंचा पाऊं। आई डिवाइड माय होल प्रेजेंटेशन टू ओनली 4 पार्ट्स। शुरू करेंगे, आधार बनाने का प्रयास करेंगे। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोलॉग। उसके बाद बात करेंगे वो सिद्धांत जिस सिद्धांत पर आधारित वी शुड कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर शुड कंडक्ट जेन्युइन, रिलायबल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। तीसरा भाग मुख्य होगा दैट इज वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स। चौथे भाग में कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स के साथ बात करूंगा, एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरणों के साथ बात करते हैं मिलकर। Appropriate design and statistical tools. I have said earlier also that same study can be conducted by using different designs and different tools. What will be the suitable tool, best suitable tool, and what will be the best suitable design to conduct experimental studies? Again, I repeat, in this modern and knowledge era, the students believe on the facts. You have to prove yourself. शुरू करते हैं प्रोलॉग से। I have taken an example of how to establish cause and effect relationship, and there are various means and methods by using that we can establish our cause and effect relationship. तो पहला है, an article was published in newspaper, एक अखबार में एक शीर्षक छपा, एक आर्टिकल छपा और अखबार पर हम काफी हद तक विश्वास करते हैं। Those who practice pranayama daily are happy, जो रोज प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो खुश मिजाज होते हैं, खुश रहते हैं। Those who practice pranayama regularly are happy। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस बारे में। By using this statement, इस कथन को सुनने के बाद जो शीर्षक था उस अखबार का, several questions may arise in our mind since we all are curious। एक शिक्षक तो क्यूरियस होगा, जिज्ञासु होगा। उस जिज्ञासावश विभिन्न प्रकार के प्रश्न हम सबके मस्तिष्क में उठ सकते हैं कि is there any cause and effect relationship between the pranayama and happiness? तो शीर्षक छपा तो क्या उसमें cause and effect relationship है क्या? दूसरा प्रश्न हो सकता है कि जो रोज प्राणायाम करते हैं क्या वास्तव में वो खुश रहते हैं, क्या वास्तव में खुश रहते हैं? तीसरा हो सकता है प्रश्न कि those who want to become calm, जो खुश रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, क्या उनको नियमित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? No experiment was conducted। अखबार में शीर्षक तो प्रकाशित हो गया, ये लेख प्रकाशित हो गया, but this was not based on any experiment। ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। Ladies and gentlemen, we should keep in the entirety of mind. This was concluded based on only relationship, on the basis of observation. So cause and effect relationship cannot be established on the basis of relationship studies or on the basis of observation studies। तो उसके लिए to establish cause and effect relationship, we have to conduct experiment, through experiments। So my concentration is how to conduct best experiments। Now I am going to discuss about the concept and principle of experimental research। कि वो सिद्धांत जिस सिद्धांत पर आधारित हमें प्रायोगिक अनुसंधानों को आयोजित करना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हाउ टू कंडक्ट की बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो आज के शीर्षक से शुरू करते हैं। एंड आई एश्योर यू दिस विल बी वेरी प्रैक्टिकल। आप अनुसंधान करते हैं जो डिसर्टेशन के रूप में करें या to attain a degree of diploma या PhD के लिए करें, so you may adopt these types of designs to conduct genuine researches। तो स्लोली थोड़ा रहूंगा, यदि मैं आपकी बात, अपनी बात को आप तक पहुंचाने में कहीं असमर्थ हूं, you may interact in between। The session will be practical in nature। I will demonstrate by using different softwares also। So let's start with the same example जो अखबार में लेख प्रकाशित हुआ था, जो उसका शीर्षक था, वहीं से शुरू करते हैं। Effect of pranayama practice on happiness। Suppose an investigator want to find out the effect of pranayama on happiness, how we have to conduct an experiment। तो किसी का भी किसी पर प्रभाव, for example effect of drug acts on Y disease, कुछ भी हो सकता है। तो how to conduct in this hypothetical example, ये जो काल्पनिक शीर्षक है जिसका प्रस्तुतिकरण आप सबके समक्ष किया गया है, in the language of research, the independent variable is pranayama practice। That is considered as a treatment। एक उपचार है, सामान्य से बिल्कुल सामान्य बातों के आधार पर बात करेंगे।
dependent variable is happiness. Investigators' interest is to find out the change in dependent variable only due to independent variable. अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य है हैप्पीनेस पर पड़ने वाले सार्थक प्रभाव, जो कि केवल एकमात्र प्राणायाम के अभ्यास से जो कभी होता है नहीं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बायोमेडिकल रिसर्च हो, चाहे इंजीनियरिंग रिसर्च हो, किसी भी क्षेत्र की बात करें, उसके साथ साथ दुनिया भर के कारक अपना प्रभाव छोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन हैप्पीनेस इज ड्यू टू प्राणायाम प्लस समथिंग. तो व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग? इसके साथ साथ कौन से काल्पनिक उदाहरण के साथ बात करते हैं? मे बी डेली रूटीन, फूड हैबिट, सोशल बैकग्राउंड, हेरिडिटी, दुनिया भर के काम जहां हम अपना प्रभाव छोड़ेंगे. बट आवर इंटरेस्ट इज ओनली टू फाइंड आउट द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हम केवल किसके एकमात्र प्रभाव को ज्ञात करना चाहते हैं? प्राणायाम के. लेकिन उसके साथ साथ दूसरे भी फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, चर हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं. वी हैव टू कंट्रोल दिस, अदरवाइज द स्टडी, द रिसर्च विल बी फुल ऑफ एरर्स. तो थोड़ी सी और अच्छी भाषा में, टेक्निकल भाषा में, कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज अ ट्रीटमेंट वेरिएंस, चेंज ड्यू टू ट्रीटमेंट. एंड इन आवर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ट्रीटमेंट इज प्राणायाम. इतनी सी बात है. Change in dependent variable other than independent variable, I included daily routine, food habits, lifestyle, heredity. This is known as error variance change due to error. So we have to conduct true experiments on the basis of principle. We should keep in the entirety of our mind. We have to follow the principle of maximization of treatment variance and minimization of error variance. हमें अनुसंधान को इस रूप में करना है जहां पर ट्रीटमेंट वेरिएंस का तो मैक्सिमाइजेशन हो और एरर वेरिएंस का मिनिमाइजेशन हो. लेकिन इस सिद्धांत से एक बात तो स्पष्ट होगी कि एरर वेरिएंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. इन्वेस्टिगेटर कैन ट्राई हिज और हर लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द एरर वेरिएंस. कोई भी अनुसंधान करता प्रयास कर सकता है कि एरर वेरिएंस को कम से कम करने का. ड्यू टू दिस रीजन देयर इज अ concept of level of significance. In social sciences, we conduct our studies at 0.05 level of significance. It means we are 95% confident. और साइंस वाले कहते हैं, since we conduct our studies in a controlled condition, they conduct their studies at 0.01 level of significance. So their confidence level is 99%. It means we cannot eliminate error variance. We should try our level best to minimize the error variance. एक अनुसंधानकर्ता को, शोधार्थी को भरपूर प्रयास करना चाहिए कि एरर वेरिएंस को कम से कम करे. कैसे करेंगे? हमारे पास तो दो ही ऑप्शंस हैं. एज ए इन्वेस्टिगेटर, एज ए रिसर्चर, वी हैव ओनली टू ऑप्शंस. बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट रिसोर्स डिजाइन, एक अच्छे शोध विकल्प का उपयोग करें. दूसरा, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल टू एनालाइज डेटा, एक अच्छी सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करें आंकड़ों के विश्लेषण के लिए. तो कैसे? अब बात करते हैं वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स. सिंस वी हैव टू कलेक्ट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, जो आंकड़ों का एकत्रीकरण करोगे किसी भी प्रायोगिक अनुसंधान को आयोजित करने के लिए, आंकड़ों का एकत्रीकरण किसी न किसी वेरिएबल, किसी न किसी चर के आधार पर करोगे. लेकिन थोड़ा सा, केवल 2-3 मिनट वेरिएबल्स के कंसेप्ट को जान लेते हैं, वेरिएबल की अवधारणा को जान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉजल मॉडल. देखिए, पुस्तकें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, लेकिन पुस्तकें कई बार हमें शंकित भी करती हैं. क्यों? The same content is expressed by different authors in different ways. उसी बात को अलग अलग लेखकों ने अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किया है, तो वो हमें शंकित करता है. So I am going to discuss about the classification of variables on the basis of a causal model. The classification of the variables on the basis of a causal model. Causal model means when an investigator wants to establish the cause and effect relationship, then this is applicable in that particular example. वेरिएबल को समझते हैं. वेरिएबल क्या है? अगर वेरिएबल को हम परिभाषित करें कि वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल, जो समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार, स्थान अनुसार परिवर्तनशील हो, वो वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल, एग्रेशन. एग्रेशन हैज अ टेंडेंसी टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सुबह अलग गुस्से का स्तर था, अब अलग है, शाम को अलग होगा. Aggression has the tendency to change with respect to place also. मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे गुस्से का स्तर अलग हो, मैं घर जाऊंगा अपने अलग स्तर होगा. This has a tendency to change with respect to individual also. मेरा अलग स्तर है, आपका अलग है. There is a long list of psychological variables: anxiety, stress, depression, biomedical variables, leukocytes, monocytes, snowfills, RBC, WBC, दुनिया भर के.
हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, दुनिया भर के वेरिएबल्स हैं, सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं। बिजनेस स्टडीज में भी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। इफ एनी इन्वेस्टिगेटर वांट टू कंडक्ट क्वांटिटेटिव रिसर्चेस, यदि कोई भी शोधार्थी अनुसंधान करता मात्रात्मक अनुसंधान आयोजित करना चाहता है, तो he or she should have an idea about the classification of variables. But since only we are discussing today about the experimental studies, so in this situation, this causal model is applicable. As per the causal model, we classify all variables into the three categories. One is independent variables, जो आज के हमारे एग्जाम्पल में क्या था, and in today's example, one is dependent variable, और तीसरा है confounding variables. Confounding variables means जो दो तीन एग्जाम्पल दिए थे, daily routine, food habits, lifestyle, habit, these are considered as confounding variables. We have to control the confounding variables. And these confounding variables are subdivided into two categories. One is intervening. These are beyond the control of investigator. These will be considered as our limitations. मान लीजिए किसका प्रभाव देख रहे हैं आप, सर्दियों में प्रभाव होगा, गर्मियों में अलग प्रभाव होगा, बरसात में अलग प्रभाव होगा। बरसात के मौसम में प्राणायाम आप कर रहे हैं, बरसात के कारण पड़ने वाले प्रभाव को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप एक इंद्रदेव को आदेश तो दे नहीं सकते 5 दिन बारिश मत करना. दिस विल बी कंसिडर्ड एज intervening variables. These will be considered as of limitations. Another is extraneous variables. To a great extent we can control. Every investigator should try her or his level best to control extraneous variables. Food habits, yes, we can control. Daily routine, we can control. So these confounding variables are divided into two subcategories beyond our control. Intervening, to a great extent we can control, comes under the category of extraneous. Now my story starts. Approach to create a design and statistical tool for experimental research. In the limit, Dubey allotted me only 30 minutes. So I included only 2 designs. दो शोध विकल्पों के आधार पर मैं अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करूंगा. If you want to conduct genuine experiments, क्योंकि शिक्षा, उच्च शिक्षा का सुधार बिना ठीक अनुसंधान के हो ही नहीं सकता. तो बात करते हैं appropriate design and statistical tools for experimental researches कैसे करें. Same experiment can be conducted by using different designs and statistical tools. आज का हमारा उदाहरण है प्राणायाम का प्रभाव हैप्पीनेस पर. दुनिया भर के टूल्स हैं विश्लेषण करने के लिए, दुनिया भर के डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन है, जिनको अपना कर हम अध्ययन कर सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू कंपेयर 2 डिजाइन्स विद एक्चुअल एग्जांपल्स. One is same study can be conducted by using single group design and same study can be conducted by using random group design. I am comparing only 2 designs and you will decide which design is better. But remember the principle of experimental research, maximization of treatment variance and minimization of error variance. हमें ऐसा कुछ करना है जिसमें कि ट्रीटमेंट वेरिएंस का मैक्सिमाइजेशन हो और जिसमें एरर वेरिएंस का मिनिमाइजेशन है. और हम दो को ले रहे सिंगल ग्रुप डिजाइन. कुछ किताबों में, कुछ पुस्तकों में, कुछ लिटरेचर में जो रैंडम ग्रुप डिजाइन है, दिस इज नोन बाय प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन. इसका दूसरा नाम भी है. तो सेम एक टाइटल, सेम बात अलग अलग रूपों में प्रदर्शित की गई है लिटरेचर में, तो ठीक है. एंड बाय अडॉप्टिंग मोर डिजाइन्स, और दुनिया भर के डिजाइन हो सकते हैं. पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन हो सकता है, रिपीटेड मेथड डिजाइन हो सकता है, दुनिया भर के डिजाइन हो सकते हैं. But today I included only 2 designs, single group design and random group design. Let's take an example, single group design. ध्यान दीजिए, again I repeat, our today's title is effect of pranayama on happiness. इसको हम कर रहे हैं, इस अध्ययन को आयोजित कर रहे हैं सिंगल ग्रुप डिजाइन के माध्यम से. So this is the design. ये डिजाइन आपके सामने, एक शोध विकल्प सामने है. O1, X and O2. O means observations. We have 2 observations. O1 means pre-test. O2 means O1 means observation 1 means pre-test. X is known as a treatment. X means a treatment. Treatment. In today's example, treatment is O2 means the post-test. It means the observation 2, that is post-test. Investigators' interest is to find out the difference between these two. If the significant difference exists in between O1 and O2, so we can say that yes, pranayama has a significant effect on the happiness. सबको करना चाहिए, दशा में आप सुझाव देंगे. तो क्या इस डिजाइन, which statistical tool will be used in this?
In this, the technique, the statistical tool which will be used is known as dependent t-test, आश्रित टी परीक्षण। लेकिन यहाँ भी वही बात है, आश्रित टी परीक्षण को, डिपेंडेंट टी टेस्ट को भी विभिन्न नामों से दर्शाया गया है लिटरेचर में, जो हमें कंफ्यूज करता है। This dependent t test is known by paired t test also. This is known by correlated t test also. This is known by repeated measure t test also. और भी और नाम है इसके। So in this, we have to analyze our data. We have to compare two different observations, O1 and O2, by using the statistical tool named dependent t test or correlated t test. If the difference exists, it means there is a significant effect of pranayama practice on happiness, and you will recommend to the society, and the findings may be generalized in the society. लेकिन क्या एक प्रश्न अब I would like to ask a question from you. क्या इसमें उस सिद्धांत की पूर्ति हुई है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस? है ना? नहीं हुई ना? It means this design comes under the category of ill design. If any investigator want to publish his or her articles in the top index journals, index in Scopus, index in Web of Science, index in PubMed, in Medline, if you conduct your study by using this, your research paper, your research study will not be published in the reputed journals. इसका मतलब एक तरह से हम सिंपल भाषा में, साधारण लेमैन की भाषा में बात करें तो आज के इसमें हमने इस डिजाइन को निरस्त कर दिया बहुत अच्छे अनुसंधान के लिए। क्यों? क्योंकि the principle of maximization of treatment variance and minimization of error variance is not fulfilled. एग्जाम्पल रोज कोर्स का आप आंकड़ों का एकत्रीकरण करेंगे, इसी रूप में करेंगे। On how many subject study is conducted? On 20 subjects. O1 means there are two observations. O1 means pre-test, O2 means post-test, and statistical tool that will be used is known as dependent t-test. I have said earlier also. दूसरे डिजाइन की बात करते हैं। अब एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा आपको, क्या इसका विश्लेषण कैसे करना है आप देखना चाहेंगे कि, और I have to proceed further, देखना है कैसे करना है? Yes. So how to do? This facility is also available in Microsoft Excel also. Microsoft Excel से कर लेते हैं, देखिए आपके सामने। I am copying these scores, इन codes को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके I am going to paste these scores in the software. Simple है जो हमारे जो फर्स्ट आप सबके सामने है। I am going to open this Microsoft Excel. Microsoft Excel में I am going to paste these scores. After opening this, और ये I pasted these scores here. Or in the first column we have the scores of, और दूसरे में क्या है? Scores. And which technique we are going to use? Priority. So click on data analysis, and independent in Excel. This is given by the t-test two samples assuming equal variances. We have two samples. We have two independent samples. That is, pair two samples for means. The command is pair two samples for means. Click on OK, and we have two ranges. Variable one range is for pre-test. Variable two range is for post-test. Click on the arrow in front of this. Select all the scores. Again, click on the same arrow. Click on the arrow in front of variable two range और फिर सभी को select कर लीजिए, सामान्य सी बात है। और उसके बाद click on the same arrow. I am going to click on OK. OK पर click करूंगा. The error will be shown. एक error दिखाएगा। मेरा उद्देश्य केवल इतना है, since in the first row we have used the character, that is alphabet pre and post. If you entered the alphabets in the first row, in that case you have to opt for labels. इतनी सी बात है। क्लिक ऑन ओके, द रिजल्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। रिजल्ट्स देख लीजिए आपके सामने। बी कंपेयर pre-test mean is 10.3, post-test mean is this, and this is not significant. P value is greater than 0.05. It means it is concluded that there is no significant effect of pranayama practice on happiness इस काल्पनिक उदाहरण में। लेकिन यह डिजाइन अच्छा नहीं। अब अच्छे डिजाइन की बात करते हैं, और इसको दूसरे सॉफ्टवेयर से भी आप बात करना चाहें तो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर यू कैन यूज स्टार, मिनीटैब,
दुनिया भर की सॉफ्टवेयर SPSS, you may analyze the data by using any software. Now I am going to discuss about and the design, and the design is, we have discussed about the analysis part. Next design is best. For that we have to understand, ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्रस्तुतिकरण में, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं करने जा रहा हूँ, अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। प्रायोगिक अध्ययन कोई आज तो हुए नहीं। अगर हम इतिहास की बात करें इसकी, तो वी हैव नॉन एविडेंसेस, हमारे पास दुनिया भर के एविडेंसेस हैं, तो उसके लिए हमें जानना होगा अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बात करें, these are based on the earliest assumptions of the experimental research, and this was given in the year 1872. This is known as by the law of a single variable, जो आज का अनुसंधान है 1872 में। लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल जो हमें दिया जॉन स्टुअर्ट ने, उस पर आधारित है। तो जॉन स्टुअर्ट की भाषा में बात करते हैं। Let's discuss in the language of John Stuart. If two situations are alike in all respects, if one element is added to one, not to another, if one element is subtracted from one, not from another, if the difference exists, that is due to added element or subtracted element. हिंदी में बात करते हैं, यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, या एक से कुछ निकाला जाए दूसरे से नहीं, फिर भी दोनों के बीच में यदि सार्थक अंतर पाया जाता है, तो वो दिए गए एलिमेंट या निकाले गए एलिमेंट के कारण है। मानकर चलिए, as per this principle, as per this theory. So if two situations are alike in all respect, what do you mean by this? Two situations are, if two groups, experimental group and control group, are same, if one element is added to one, what we are going to add? Pranayama, not to another. If the difference exists, that is due to added element, and in our today's example, added element is pranayama. तो इससे लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल से कंसेप्ट आया, किसका कंसेप्ट आया? कंट्रोल ग्रुप का, जिससे उत्पत्ति हुई रैंडम ग्रुप डिजाइन की। सी द डिजाइन, दैट डिजाइन वाज बेस्ड ऑन हाउ मेनी ग्रुप्स? दैट मींस सिंगल ग्रुप डिजाइन वन, and how many observations were there? Only two, pre and post, and in this we have two groups and four observations. See, we have two groups, and O1 means pre-test of experimental group, X means pranayama practice treatment, and O2 means post-test of experimental. O3 means pre-test of control group, and C means control, nothing is given to that, and O4 means post-test of control group. See, this design is based on the earlier assumptions of the experiment. That concept is given by John Stuart in the year 1872. कोई अच्छे प्रायोगिक अध्ययन ऐसा नहीं कि अभी हो रहे हैं। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं how to conduct. थोड़ा सा, which statistical tool will be used? ANCOVA, analysis covariance. अब देखिए, see the raw scores. How many groups we have? Two groups. In this example, consisting of 40 subjects, 20 in each group, there are two groups and four observations. Two groups are experimental and control, and four observations are pre and post of experimental and pre and post of control. And there are 20 pre-test scores of experimental group, and these are 20 post-test scores of control experimental group, and these are 20 pre-test scores of control group. And last column is 20 post-test scores of the statistical technique you have said. We have to use analysis of covariance. What do you mean by covariance? थोड़ा सा सामान्य भाषा में समझेंगे इस टेक्निक का अर्थ, तो we will be apply in a proper way. तो हम इसका उपयोग एक ठीक प्रकार से कर सकते हैं. How many pre-tests are there? How many pre-tests are there? Two. Pre-test of experimental, pre-test of control. तो इन दोनों के बीच में अंतर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। मैडम, आपने एक एक्सपेरिमेंटल नाम का व्यक्ति है, कंट्रोल नाम का व्यक्ति है, आरंभिक रेखा आपने 100 मीटर की मान लो स्प्रिंट लगवाना चाहते हो, एक को 5 मीटर आगे खड़ा कर दिया और वो जीत गया, तो क्या उसको विजेता घोषित कर दोगे? फॉर एग्जाम्पल, और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, एक में घोड़े हैं एक में गधे हैं, हो सकता है कि घोड़े करें तो प्रभाव पड़ेगा, दो पर ना पड़े। सिंपल एग्जाम्पल में इनिशियली बोथ द ग्रुप शुड बी इक्वल। लॉजिकली इस बात से सहमत है या नहीं आप?
अगर इनसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट, यानी प्री टेस्ट दोनों के अलग अलग पाए गए, भिन्न पाए गए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ा सा क्योंकि जानने का प्रयास करेंगे इसको। इसका अर्थ क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप? इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि यू फेल्ड इन द इक्वल असाइनमेंट, यू फेल्ड इन द रैंडम असाइनमेंट, कि आप रैंडमली दोनों ग्रुप्स को समान रूप से विभाजित करने में। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपका या नेगेटिव एस्पेक्ट है? तो आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन क्या है? मान लो आपने यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू डिवाइड द ग्रुप्स इक्वली, आपने दोनों समूहों को बराबर रूप से विभाजित करने में प्रयास किया, बट यू फेल्ड। व्हाट डज इट मीन? आप ये कहेंगे दोबारा से नए अध्ययन को करेंगे, दोबारा से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे? नो। एनकोआ, ध्यान से समझिए, एनकोआ एक ऐसी टेक्निक है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, वो सांख्यिकीय टूल है, वो सांख्यिकीय तकनीक है जो प्री टेस्ट में डिफरेंस के कारण पड़ने वाले प्रभाव के प्रभाव को हटाकर प्रभाव देखने की प्रक्रिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस और नो? स्टेप बाय स्टेप। प्री टेस्ट में डिफरेंस होना चाहिए या नहीं? नहीं हो गया तो एरर है। वो अध्ययन को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? करेगा। पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव करेगा? नेगेटिव करेगा। तो प्री टेस्ट में डिफरेंस था, उसका जो नेगेटिव प्रभाव पड़ा, उस नेगेटिव प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देखने की प्रक्रिया को टुगेदर। भाई सांख्यिकी के नाम से क्लियर है ना, कोवेरिएंस टुगेदर, कोवेरिएंस यानी साथ नेचर के कोवेरिएंट हो गए उनके कारण। तो इसमें which will be considered as covariant? Pretest will be considered as covariant सामान्य भाषा में। तो दिस इज द बेस्ट। इससे भी अच्छे डिजाइन है, ऐसा नहीं है। तो अब मेरा प्रश्न, क्या यह डिजाइन फुलफिल करता है दैट प्रिंसिपल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस? आया ना? तो भाई आप बताएंगे ना कि वो जो प्रिंसिपल उसको फुलफिल यह डिजाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, क्यों? ड्यू टू द जोन्स टू आर्ट्स कंसेप्ट, due to the Jones 2 arts law of single variable, if two situations are alike, एक experimental है, control है, if one element is added in our hypothetical example, we added only one practice, pranayama practice, of the difference like this, that is 100% attributed due to treatment, and in our hypothetical example treatment is pranayama practice। इतनी सी बात। तो आज की चर्चा में कि हमें एक अच्छे शोध अभिकल्प का उपयोग करना चाहिए। हायर एजुकेशन का उत्थान नहीं हो सकता, हायर एजुकेशन में सुधार नहीं हो सकता। बेशक हम इफ यू ब्लेम्स politicians for this, who believes that this is due to the facilities and equipments, no, this is due to the lack of proper research work in any field, like business studies, management, engineering, biomedical research, education, social science, किसी भी क्षेत्र की बात करें, यदि if we want to uplift the status of higher education, the genuine research should be conducted। एक व्यंग्यात्मक एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ, इसको विराम दूंगा। दिस फैसिलिटी एनकोआर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अंत में एक बार डेमोस्ट्रेट करूंगा मैं इसको, और उससे पहले मैं कुछ एक एग्जाम्पल, व्यंग्यात्मक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल की बात करता हूँ जो कि एक वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। एक पहला, मौसम विभाग रिसर्च करता है नहीं करता? करता है ना। कल्पना कीजिए मौसम विभाग ने कल का कि कल का टेम्परेचर 5 से 50 डिग्री के बीच में रहेगा, तो आप सर्दी के कपड़े निकाल कर रखेंगे गर्मी के? आप कहेंगे बेवकूफ बना रहा है, 5 से 50 डिग्री के बीच में। वही मौसम विभाग कहेगा कि कल का टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री के बीच में रहेगा, यू विल बी मेंटली रेडी फॉर कोल्ड। अध्ययन किस अध्ययन की गुणवत्ता ये तो पता चल गया, लेकिन हाउ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज डिसाइडेड, अनुसंधान की गुणवत्ता का निर्धारण हम कैसे करें? दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द इंटरवल अबाउट दैट वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट्स। तो आप अपने अनुसंधान को देख लीजिए, जितने भी टॉप इंडेक्स जर्नल्स है उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल इज मेंशन्ड। एक छोटा सा एग्जांपल, और भी दुनिया भर की बातें हैं। तो एसेंशियली वी शुड इंक्लूड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स इन आवर स्टडी। क्यों? On the basis of the confidence interval, the quality of the study is decided
एक और बात चलो करते हैं, छोटी सी बात। मान लो कि आज का डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आप सबकी हैप्पीनेस को मेजर किया किसी भी स्किल के माध्यम से, कल्पना कीजिए, और उसका आप सब मान लीजिए 50 है, कल्पना कीजिए, और 50 का जो पॉइंट एस्टिमेट है, मीन निकाला, मीन उनका सबका आपका है 50, और दुबे जी ने स्टडी कंडक्ट की, इज इट ओके? कितना मीन है? एक चेयरमैन साहब कहते हैं, जो यंग रविंद्र जी कहते हैं, दुबे जी संस्था के पास पैसे की कमी नहीं, रिपीट द सेम स्टडी। आपने रैंडमली उसी पॉपुलेशन से लिया और आपने वही अध्ययन दोबारा रिपीट किया, वही सैंपल साइज है, तो आपने हैप्पीनेस का मीन निकाला, जो 50 आया था, क्या दोबारा 50 आएगा? आया ना? नहीं आएगा, लाखों में कभी आ जाए, एक बार तो आ जाए। एक तरफ तो हम कह रहे हैं सैंपल रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, और उन्होंने कहा कि दुबे जी रिपीट द सेम स्टडी 10 टाइम्स, तो 10 के 10 बार रिजल्ट्स। इसका मतलब कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है सैंपल का, सैंपलिंग एरर होगा, कैसे कंट्रोल करें? तो वहां कंसेप्ट है सेंटर लिमिट थ्योरम का। तो सेंटर लिमिट थ्योरम क्या कहती है? मीन ऑफ ऑल मीन्स, कितनी मीन है इस एग्जांपल में, कितनी बार रिपीट किया इन्होंने? 10 टाइम्स। कि मीन ऑफ ऑल मीन्स विल गिव द एक्यूरेट रिजल्ट्स, 10 बार 15 बार रिपीट करो, उनका मीन जो एक पॉइंट एस्टिमेट है दैट विल बी एक्यूरेट। क्या प्रैक्टिकली संभव है? नहीं है। तो उसका पैरेलल हमें सॉल्यूशन सांख्यिकी ने दे दिया है कि बाय कंडक्ट स्टडी वन टाइम यू कैन डिसाइड द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, जो चर्चा की थी, दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। तो इन छोटी छोटी बातों का अपने एक अनुसंधान में ध्यान रखे। अब बात करते हैं कि थोड़ा एनालिसिस, मेरा लास्ट पार्ट, और इसको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कहाँ पर नहीं है, तो आई में डेमोस्ट्रेट बाय यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आप सबसे यूज करते हैं, एसपीएस से डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। एक और बात, कई बार अब मैं वहां से मैंने डेटा कॉपी किए, कहाँ से? ये मैडम तो कहाँ है और पॉइंट से। तो सामान्य सी बात है, कई बार हमें बीच में छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, दिस विल नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी वी कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम पावर पॉइंट टू और एक्सेप्ट का हुआ, एक्सेप्ट करता है तो कहाँ पेस्ट कर दूं? एक्सेल में कर देते हैं नई शीट के साथ, ये एक्सेल में पेस्ट कर दिया, और नाउ अगेन आई एम कॉपिंग फ्रॉम एक्सेल। अब वो एक्सेप्ट करेगा, वो सॉफ्टवेयर के अपने लिमिटेशंस हैं, और आई एम गोइंग टू पेस्ट इन एसपीएस, और ये एसपीएस में पेस्ट कर दिया। किस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। हाउ मेनी कॉलम्स वी आर हैविंग? So first column is pretest of experiment. लेकिन we have to enter all the scores only in 2 columns. In the first column we have to enter in SPSS. We have to enter all the scores of pretest. These are the pretest. In pretest को मैं लेता हूँ कहाँ? जो 20 scores किसके हैं? एक्सपेरिमेंटल के। तो पहले कॉलम में किसके स्कोर हो गए सभी? कॉलम में सभी स्कोर हो गए, और दोनों ही कॉलम में पहले 20 स्कोर किसके हो गए? दोनों ही कॉलम में पहले 20 स्कोर किसके हो गए? We have to give the value for a label. Our label is, so I entered the value of 1. 1 means 1 stands for yes, experimental. 2 stands for control. सामान्य सी बात है। तो we have to use 3 columns. पहले कॉलम में क्या है बता दीजिए आप। पहले कॉलम में क्या है? ये कंट्रोल भी है, दोनों के स्कोर है। और दूसरे कॉलम में क्या है? तीसरे कॉलम में क्या है? ग्रुप्स है ना। तो ग्रुप्स में गो टू द वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स वी आर हैविंग? और क्या क्या वैल्यू दी है हमने ग्रुप 1 और 2 के लिए? 1 2 1 1 स्टैंड्स फॉर
मेंटल ऐड कर दीजिए, एंड 2 स्टैंड्स फॉर ऐड कर दीजिए। नाउ द डेटा एंट्री इज कंप्लीट, डेटा एंट्री कौन हो चुकी है। You have to give the commands to the software. Click on analyze, click on general linear model, click on univariate. Covariate क्या है, चर्चा हो चुकी है। Which column will be considered as covariate? जिसके प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देख रहे हैं। Yes, pre will be considered as, तो pre को covariate में ले आइए, and post will be considered as a dependent. Group is a fixed factor. Click on OK. Everything will be in front of you. Yes, we are comparing the groups. In this example, there is no significant effect of pranayama since in front of the group the value 0.932. This is higher than the value of 0.05. So it is concluded that there is no significance of pranayama practice on happiness in this hypothetical example. So we have discussed about the main sub-theme, how to conduct few experiments, how to conduct reliable experiments, विश्वसनीय, वैध और सही प्रायोगिक अध्ययन कैसे करें। क्यों? The same study, same research can be conducted by using different designs, and same study can be analyzed, same data can be analyzed by using different statistical tools. लेकिन एक और बात, हम भूल जाते हैं कि statistical laws, there are some limitations of statistics. एक आंकड़ों का खेल भी बड़ा भयानक है। It is not possible to discuss about all limitations. Main limitation is statistical laws are not exact. सांख्यिकी के नियम सटीक नहीं है। After analysis, विश्लेषण के बाद जो हमें उत्तर मिलता है, solution मिलता है, that is a probable answer. वो एक संभावित उत्तर है, लेकिन उसकी क्वालिटी का निर्धारण तो भाई कॉन्फिडेंस इंटरवल करेगा। एक व्यंग्यात्मक एग्जाम्पल के हाउ दूसरा एक और है कि statistics is liable to be misused. जो बहुत बड़ा ज्ञाता सांख्यिकी का हो जाता है उसका दुरुपयोग करता है। अब दुरुपयोग दो तरह से हो सकते हैं। One is intentionally, जानबूझकर, before joining this official और ऑनलाइन भी है, तो एक सोच समझकर एक शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। Before joining this, पंडित रविशंकर शुक्ला I was assistant professor in BHU. बड़ा भव्य है, रोज ही PhD जमा होती है। ऐसा ही शायद कोई दिनों दुनिया भर की PhDs, और वहां जो मेन गेट के सामने कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की दुकान है, और वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स टाइपिंग करते करते इतने प्रगाढ़ विद्वान, प्रगाढ़ विदुषियां हो चुकी हैं कि वो एक शोधार्थी से अधिक जानते हैं, शोधार्थी नहीं, मार्गदर्शक से भी अधिक जानते हैं, ठीक है ना। और वो आप डेटा लेकर जाओगे तो कहेंगे भाई रिजल्ट कैसे लाने हैं। इट मींस दे नो हाउ टू मैनिपुलेट, उनको पता है कि मैनिपुलेशन कैसा करता है। ये कैसा हुआ, इंटेंशनली, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। ये तो मैं वैसे भी एक एग्जांपल तो भाई आप टीवी देखते हैं ना, टीवी के नीचे डिक्लेरेशन होता है कि इसमें सारे पात्र काल्पनिक हैं, तो ये मेरी बातें काल्पनिक है, मेरा डिक्लेरेशन है, ठीक है, पूरी काल्पनिक बात है। दूसरी बात, अनइंटेंशनली सच में कैसे करते हैं। मेरे दो स्कॉलर बैठे हैं, मुझे दिखे, दोनों प्रगाढ़ विद्वान। क्योंकि स्कॉलर ऐसा होता है कि ना तो स्टूडेंट की श्रेणी में टीचर कहते थे, टीचर नहीं स्टूडेंट कहते थे, और बीच में लटका हुआ रहता शोधार्थी को ऐसा, ठीक है। दोनों ने क्या किया, एक ने कहा कि पिता से, पिताजी मैं एनालिसिस रिसर्च करूंगा, तो पीएचडी का एडमिशन ले रहा हूँ, मुझे लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप खरीद के दे दिया। दूसरे ने कहा लैपटॉप नहीं, मैं तो इस बहाने पीएचडी के बहाने बाइक खरीद लेता हूँ, और दूसरे ने क्या खरीद ली, बाइक। दोनों लैपटॉप दोनों शेयर करते थे, बाइक दोनों शेयर करते थे। एक जो प्रगाढ़ विद्वान हो चुका था रिसर्च का, क्योंकि पीएचडी कर रहा है, प्रगाढ़ विद्वान है, तो बाइक चलाने की शैली बदल डाली। पीछे दूसरा बैठा लैपटॉप वाला, और शैली क्या हुई, जहां खाली रोड था, दूर दूर तक कोई नहीं, वहां धीरे धीरे रेंगते हुए कछुए की तरह वो कह रहा तेज चला पड़ा, नो आई एम ड्राइविंग ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। भीड़ भाड़ साइंस से निकाला, बसों के उसके बीच में से, वो बोले मरवाएगा क्या, कीप क्वाइट, आई एम ड्राइविंग ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। बोथ रीच डेस्टिनेशन, दोनों अपने गंतव्य पर पहुंचे। बोले भाई आज तो मैं तेरे पीछे बैठ गया हूँ, आज के बाद मैं तेरे पीछे नहीं बैठा हूँ, बट टेल मी हाउ यू आर ड्राइविंग ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च।
बोले जेंटलमैन, डेटाबेसिस पर, पबमेड, स्कोपस पर मैं जितने भी सर्वेक्षण अध्ययन वो रोज पिछले 2 साल से देख रहा हूँ. आई हैव गॉन थ्रू द सर्विस स्टडीज फॉर द लास्ट 2 years, causes of accidents and places of accidents. तो 0.001% एक्सीडेंट्स होते हैं चौराहे पर, और 99.99% नहीं 0.999% एक्सीडेंट्स होते हैं चौराहे पर, और 0.001% एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे. बोला जहाँ ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना वहां मैं समय बिता पानी तो क्या निकल लेता हूँ. अगर स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बात करें, अगर इस शैली में कोई बाइक चलाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स विल बी मिनिमाइज्ड. स्टैटिस्टिक्स तो यही कहेगी. इन दिस वे वी ड्रॉ कंक्लूजंस, वी ड्रॉ इन्फरेंसेस आफ्टर द एनालिसिस ऑफ डेटा. तो कुल मिलाकर दिमाग में बैठा ले, स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट एंड statistics is liable to be misused. दोनों सीमाओं को ध्यान रखते हुए दोनों से करना चाहिए. यदि हम शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, एक बार और मैं एक धन्यवाद देता हूँ दुबे जी को, मैडम को, कि मुझे आमंत्रित किया, इस लायक समझा. 2-3 बातें मैं वेट कर रहा था कि चेयरमैन साहब या सेक्रेटरी या एक तीसरे फाइनेंस वाले देखते हैं जो होंगे, उनके सामने कहता है तो प्रभावशाली बात थी, लेकिन मेरा मैसेज कन्वे कर दीजिएगा कि पंडित, आई बिलोंग टू पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी. आज तक ऑफिशियल धन्यवाद देने का अवसर नहीं मिला, पहली बार मिला 5 साल में कि आवर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज साउथ एशियन यूथ फेस्टिवल, जिसमें 10 देशों ने भाग लिया था. बड़ा आयोजन था, जिसमें से इस सोसाइटी को, इस महाविद्यालय को आग्रह किया गया था. इन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट 2 बसें निःशुल्क प्रदान की थी. मैं ऑफिशियली इनको धन्यवाद, समिति को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसी अच्छी सेवाएं सब दी, और ऑफिशियली आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स. दूसरी बात, आज तो गुरु पर्व है, तो बड़ा अच्छा दिन चुना आप सबने. यह आयोजन के लिए गुरु पर्व है, और उसके बारे में मैं अपना व्यक्तिगत बताना चाहूंगा कि आई स्टार्टेड माय सर्विस करियर इन द ईयर 1999 फ्रॉम खालसा कॉलेज. जो सिखों के जो 10 गुरु हैं, उनमें से एक गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब, उनका गुरुद्वारा है हरियाणा में अंबाला के पास पंजोखरा साहिब. तो वहां मैंने 3 साल अपनी सेवाएं दी. इस गुरु पर्व का महत्व मैं जानता हूँ कैसा है. 3 साल देखा था किस भव्य आयोजन करते थे. गुरु पर्व ऐसे एक पवित्र दिन, ये भी आप सबको बधाई है. तो अगर समिति के सदस्य बैठे होते तो मैं कुछ और भी बहुत कुछ कहता. तो एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू ईच एंड एवरी यूनिट एसोसिएटेड विद this organization, and I congratulate the organizers also. अब जितने भी शोधार्थी विद्यार्थी हैं, किसी प्रकार का यू में आस्क एनी क्वेरी, कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, यू में आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. किसी का भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, रिसर्च बेस्ड कोई सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी डिजाइन की बात करें, किसी भी स्पेसिफिक टूल की बात करें, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें. ठीक है सर, धन्यवाद. Thank you so much, sir. Now, our chairperson, Honorable Professor Parvinder Hanspal ma'am, Professor and Dean, School of Education, Max University, Raipur, Chhattisgarh, is here. I would heartily welcome her in our program. Now, I would like to invite Dr. Neelam Arora ma'am to welcome our Honorable Chairperson, Professor Parvinder Hanspal ma'am. Thank you, ma'am. Now, I would like to request Dr. Honorable Dr. Arun Kumar Dubey, sir, Principal of Columbia College, for the momentum presentation to Honorable Dr. G. Ravindra, sir.
Now, I would like to request Dr. Aba Dubey ma'am, Vice Principal, Columbia College, for the memento presentation to Honorable Dr. Rajiv Chaudhary sir. Now, I would like to request Dr. Neelam Arora ma'am for vote of thanks. थैंक यू ऑल। एक बार फिर मैं आप सभी से मुखातिब हूँ आभार की भावनाओं को लेकर। Today's keynote speaker, Dr. G. Ravindra, former director and CRT New Delhi. On behalf of everyone present here, I would like to extend our heartfelt thanks to esteemed keynote speaker, Dr. G. Ravindra. Sir, what we have learned from you today will help us to make ourselves and our society better. Thank you so much, sir. Thank you again. Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया आपका. Honorable Professor Rajiv Chaudhary, sir. Sir, we know that you have handled the responsibility of more than one department. We are grateful to you for taking time out of your busy schedule and accepting our invitation. Your commitment to promote academic excellence has inspired us. The Columbia College family express its gratitude to you, sir. Thank you so much, sir. और अब एक विनम्र अनुरोध है मेरा हमारे सभी अतिथियों से कि जो लंच है वो आप सभी का इंतजार कर रहा है। खाना यानी कि भोजन आपका इंतजार कर रहा है। बहुत अनुरोध है मेरा आपसे कि आप लंच के लिए हमारे साथ चलें और इसके साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है हमारे इस प्रोग्राम में, उन सभी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। After lunch, there will be a paper presentation in both online mode presentation here and offline mode presentation is in different departments. CC, Columbia College of Education, or volunteers will escort you for offline presentation. Thank you so much. After lunch, you all, I request all of you to be gathered here again for paper presentation. Thank you so much. दीपक